Hello everyone, today we are discuss about the all Hetvabhasas with the trick of Indian logic. ठीक है, UGC Net paper 1. Let's start. In Indian logic is a fallacy is called the Hetvabhasa. It means that the middle term appears to be a reason but is not a valid reason. ठीक है. Next, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं minor term is the subject of the conclusion and the major term is the predicate P of the conclusion. ठीक है. यहाँ पर आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं all scientists are biased, all engineers are scientists, so all engineers are biased. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो रीड किया गया है माइनर टर्म है एंड बायस्ड इट वाज मेजर टर्म है. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर और भी देख सकते हैं all things which are smoke have fire. यहाँ पर fire was the major term and minor term minor primacy देख सकते हैं the hill has smoke. यहाँ पर middle term smoke. ठीक है. and hill was the minor term. ठीक है. and conclusion therefore this hill has fire. next यहाँ पर देख सकते हैं हेतुभाषा occurs the middle term appears to be the reason but it is not the valid reason. There are 5 kinds of fallacies are there according to the Naya syllogism or Naya school. ठीक है. Number 1 Shabba Vichara, number 2 Viruddha, number 3 Shatu Pratipaksha and number 4 Ashiddha and number 5 Badhita. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेतुभाषा. शब्द विचारा हेतुभाषा इसका 3 पार्ट्स है. ठीक है. 3 ब्रांचेस है साधारण असाधारण एंड अनुपसंहारी. एंड यहाँ पर विरुद्ध सप्रतिपक्ष एंड असिद्ध हेतुभाषा का भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्रांचेस है असिद्ध स्वरूप असिद्ध एंड विपर्यथ असिद्ध. ठीक है. एंड बाधित यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं all the 5 fallacies are regarded as the material fallacies. ठीक है. and 5 kinds of fallacies are recognized. सिद्ध और साध्य सम this is the fallacy of unproved middle. ठीक है. what is असिद्ध और साध्य सम this is the unproved middle. ठीक है. this is the fallacy of unproved middle. next शब्द विचारा what is शब्द विचारा this is the fallacy of irregular middle. ठीक है. what is the सत्य प्रतिपक्ष here the middle term is contradicted by another middle term. ठीक है. what is badhita badhita it is a non-inferential contradicted middle. ठीक है. and what is viruddha this is the contradictory middle. it is the contradictory middle. ठीक है. next what is असिद्ध हेतुभाषा के बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं. it is known as the साध्य सम. ठीक है. it is the fallacy of unproved middle and it occurs when the middle term is not present in the minor term. ठीक है. not present in the minor term and it is further divided into 3 kinds. ठीक है. सिद्ध और साध्य सम this is the fallacy of unproved middle. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल. ठीक है. शब्द विचारा this is the fallacy of irregular middle. यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग. ठीक है. and विरुद्ध it is the contradictory middle. यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल. next शतु प्रतिपक्ष it occurs when the middle term is not contradicted by another middle term. for example यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं sound is eternal because it is audible and sound is non-eternal because it is produced. this is the example of the शतु प्रतिपक्ष. ठीक है. and badhita it is the हेतुभाषा which occurs when the middle term is contradictory middle some other promanus other than the inferences like the perception. ठीक है. and one instance of badhita fallacy is fire in cold because it is subsistence. for example
of the Badhita, fire is cold because it is subsistence. ठीक है, एग्जाम्पल देकर भी क्वेश्चन आ सकता है. Here the fire is cold is the fallacy because the middle term is not compatible with the minor term. ठीक है, शब्द प्रतिपक्ष. Here the middle term is contradicted by another middle term. यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बारिदा, इट इज द नॉन इन्फरेंशियल कॉन्ट्रडिक्टरी मिडिल. ठीक है, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप लोग. यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट 1 पर बोला जा रहा है इन द इन इंडियन लॉजिक द फैलासी वाज कॉल्ड द हेतुभाषा. ठीक है, स्टेटमेंट 2 पर बोला जा रहा है 5 काइंड्स ऑफ फैलासीज वाज रिकॉग्नाइज्ड. ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट आंसर. ठीक है, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट ये वो देख सकते हैं सॉल्यूशन अच्छे से. इन इंडियन लॉजिक द फैलासी इज कॉल्ड द हेतुभाषा एंड 5 काइंड्स ऑफ फैलासीज आर रिकॉग्नाइज्ड. असिद्ध, सत्य सम, शब्द प्रतिपक्ष, बाधिता, विरुद्धा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैच द फॉलोइंग पर दिया हुआ है. ठीक है, ये बार आप लोग देख सकते हैं हेतुभाषा मींस फैलासी डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं. ये वाज द करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, A1, B2, C3 and D4. Linga, middle term. Hetvabhasa, fallacy. Proma means the valid knowledge and Hetu means the reason. ठीक है, so option number A was the correct answer. Question number 2 का. Next solution details में आप लोग देख सकते हैं. Linga means the middle term like in the syllogism. ठीक है, Hetvabhasa is a fallacy. Proma means the valid knowledge and aproma means the invalid knowledge. ठीक है, and Hetu is the reason. So correct answer is option number A. ठीक है, next question number 3. Sound is eternal because it is produced. This is the example of which kind of fallacy? Option number A was the correct answer, विरुद्धा. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आया था. ठीक है, ये वो देख सकते हैं विरुद्ध इज a fallacy of contradictory middle. The middle term is a type of the fallacy instead of the proving the existence of the major term in the terms minor terms. It provides or proves the non-existence. ठीक है, for example यहाँ पर देख सकते हो sound is eternal because it is produced and here the produced and instead of the proving the eternal sound. ठीक है, and prove the non eternally. Next question, question number 4. Sound is eternal because it is produced. It is the example of the Hetvabhasa. This statement was incorrect. ठीक है, but the Hetvabhasa is a fallacy of irregular middle. This statement was correct. So option number B was the correct answer. Option number 4, question number 4. ठीक है, नेक्स्ट ये पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं. साउंड सॉल्यूशन देख सकते हैं. साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द विरुद्धा. ठीक है, fallacy of contradictory middle. Hetvabhasa is a fallacy of the irregular middle. For example, sound is eternal because it is audible. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 मैच द फॉलोइंग पर दिया हुआ है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट आंसर. ठीक है, A4 होगा. असिद्ध, sky lotus is the fragments because the lotus like a lotus of the pond. ठीक है, and B2 Hetvabhasa, sound is eternal because it is the audible. Sound is non eternal because it is produced. and C2 होगा शब्द प्रतिपक्ष. सॉरी Hetvabhasa का होगा sound is eternal because it is audible. ठीक है, शब्द प्रतिपक्ष का होगा C2 sound is eternal because it is audible. Sound is non eternal because it is produced. ठीक है, ठीक है, and बाधिता D1 होगा fire is cold because it is subsistence. Option number B was the correct answer. Next
यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, in the naive syllogism the statement which of the following proven is the known as proved is known as option number A प्रत्यजना was the correct answer, ठीक है। डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं प्रत्यजना is a statement to be proved in naive syllogism. For example, this hill has fire प्रत्यजना because it has smoke हेतु what whatever the smoke has fire reference. This is the udaharana, and this hill has smoke which is invariably associated with the fire upanaya, and therefore the hill has fire निगमन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 was correct answer, डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, consider following example. Ram is a mortal because he is a man, therefore all men are mortal. Here the option number C was the correct answer because he is a man. ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन डिटेल्स में देख सकते हैं। ये तो इज द मिडिल टर्म इज द मेन रीजन टू एस्टैब्लिश ए प्रोपोर्शन, ठीक है। इन द एग्जांपल बिकॉज ही इज अ मैन ही इज द हेतु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फायर इज not warm because it is produced such as a water for this is the example of the option number B bahita vishya was the correct answer, ठीक है। यहाँ डिटेल्स में आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। Hetvabhasa, it is a non-inferential contradictory middle. Here the middle term is contradicted by some other promanas and not by the inference. Okay? It cannot be proved for the major term of the disproved by another stronger sources of the valid knowledge. ठीक है, डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर विरुद्ध के बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं। एंड स्वरूप सिद्ध के बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं। यहाँ द माइनर टर्म इज नॉट अनरियल, ठीक है, बट द मिडिल टर्म इज कैन नॉट बाय इट्स वेरी नेचर बट प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, ठीक है। साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्वरूप सिद्ध, ठीक है। हियर द विजिबिलिटी कैन नॉट बिलोंग टू द साउंड व्हिच इज ऑडिबल। Next, question number 9. Fire is cold because it is subsistence. It is the instance of which of the following Hetvabhasa fallacy. This is the example of option number B. Barita non-inferential contradictory middle was the correct answer, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग एग्जाम्पल सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. When the middle term is contradicted by some other promanas not by the inference, it is known as option number C. Badhita was the correct answer. Next, यहाँ पर डिटेल्स में सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which all are the terms that must be present in the inference or अनुमाना। ऑप्शन नंबर D was the correct answer. A, C and D was the correct answer, ठीक है। हेतु श्रद्धा एंड पक्ष was the correct answer, ठीक है। A, C and D. So option number D was the correct answer. A, C, D. हेतु श्रद्धा एंड पक्ष, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैलासी और हेतुभाषा प्रोड्यूस्ड इन द कंक्लूजन ड्यू टू द reputation of the श्रद्धा बाय ऑप्शन नंबर बी वाज करेक्ट आंसर विरुद्ध, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्स में लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो डन। इस तरह के वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयर माय वीडियो।